Hello everyone, myself Lakhan Bhurewal. I am biology teacher at Science from Jalna. Now let us move ahead. Let's see how plants take the water that has been absorbed by roots up to the last part, that is the apical part of that plant body. Plants कैसे xylem के पानी को अपने ऊपर के कॉर्नर तक, एंड तक, जैसे कि लीफ टिप या फिर अपाइकल मेरिस्टेम तक पहुंचाते हैं, इसे देखते हैं. एंड फॉर दिस द टू theories were put forth. First one was root pressure theory, which was rejected because the value of root pressure is not much enough to carry the water up to a much height. It has a very low value. Therefore, another theory was put forth. It was transpirational pull theory, also known as cohesion tension transpiration theory. Cohesion tension transpiration theory by Dickson and Joly in 1894. By Dickson and Joly in 1894. What is transpiration? We have seen that transpiration is the loss of water from stomata in the form of water vapors, and that loss of water is responsible for moving water along the xylem from root to the upper aerial parts. So this theory is about transpirational pull. First of all, what is pull? Pull means to pull something. There is a force of pulling force that pulls water. Remember, water is not pushed from roots, it is pulled towards leaves. Water is not pushed from downward up to leaf. Instead, water is pulled by transpiration up to the leaves. How that pull is created? So the pull is created with the help of three main forces. That three forces are cohesion force, adhesion force, and the surface tension of water molecule. In physics, you have seen this. What is cohesion? Cohesion is the co means साथ में, and cohesion means the force of attraction between similar molecules. Force of attraction between similar molecules. For example, force of attraction between water molecule and another water molecule, that is the force of attraction between water. It is cohesive force of water. Adhesive force, it is the force between two different molecules. Force of attraction between two different molecules, like water and the wall of xylem. Water and the wall of xylem. For example, this is a xylem vessel. This is a xylem vessel. It is filled up with water. So this is water. So the molecules of water are in contact with each other. So they have a force of attraction, that is the cohesive force between water. Water will also have force of attraction with the wall of xylem vessel. So that will be the adhesive force between water and xylem vessel. Water and xylem, water and water is cohesive, water and xylem is adhesive, that is adhesion. And thirdly, water will be also having a force in liquid state with itself, so that creates a surface force. It is called surface tension. You have seen it in physics. So that same surface tension is also present here between water molecules in liquid phase than in gaseous phase. So these three forces are most important here, because these three forces will help water molecules to form a continuous column. It will make water a continuous unit, a long tube will be filled up with water, and hence all water molecules will be bound to each other, and they will be also attached to the wall of xylem with a force, and therefore water gets two strong properties, and that two properties are tensile strength and capillarity. Tensile strength and capillarity. How tensile strength is developed? Water will resist the downward gravitational force, downward pulling force. जब पानी ऊपर की ओर जाने लगेगा तो उस वक्त उस पर ग्रेविटी एक्ट होंगी, and gravity will try to pull that water in downward direction. But water molecules are so tightly bound with each other as well as with the wall of xylem that they cannot be pulled downward, because they have obtained a tensile strength with each other. With the help of this tensile strength, a water column can be maintained, and therefore water can be easily pulled upward. Water can be easily pulled upwards. Similarly, since the lumen of xylem vessels, tracheids, is very narrow, much narrow in micrometers, so this will make the xylem as a small tube, as a capillary tube,
and due to these forces water will rise in that thin capillary tube, thin xylem vessels and thin xylem tracheids due to action of capillarity. So thus water will rise in these thin tubes and that will become the capillarity of water. अब इस तरीके से क्या होगा, हमने पहले पानी को रूट हेयर्स से अंदर तक लेकर आए बाय एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट इन जाइलम. In xylem, the water accumulates, it develops a force known as root pressure. Root pressure will help in maintaining a column in the root. तो रूट में पूरा पानी भरा हुआ रहेगा. अब पानी को यहाँ से ऊपर खींचना है तो हमें क्या करना होगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को एक के ऊपर एक बिठाना होगा. So therefore, in that tube, in xylem vessels, the water molecules will be pulled upward with the help of cohesive force, with the help of adhesive force, and with the help of surface tension of water molecules. And therefore water will obtain a tensile strength and it will become easy for water to move in that capillary tube. So these five phenomena, these three are actually main forces that drive water in upward direction. The movement of water is known as ascent of sap in xylem. Movement of water is known as ascent of sap, and the ascent of sap in due to transpiration is driven by these three forces, and therefore water gets these two properties. You can be asked what is tensile strength of water. So the ability of water to resist a pulling force, and the ability to rise upward is known as capillarity. Ability to resist pulling force is known as tensile strength, and ability to rise upwards is known as capillarity. Now water can easily move up in upward direction, but we have to create a pull. हमें ऊपर खींचना है पानी को. अभी तो पानी को स्ट्रेट कॉलम कैसा बनाना है, इसके लिए ये तीन लोग काम करेंगे, and water will get these two properties also. Water is now in the form of a column, लेकिन उस पानी को ऊपर खींचना है हमें, जैसे कुएं से पानी निकालते हैं उस तरीके से. So for that we should know how transpiration actually works. तो यहाँ पर आपको टीएस में दिखाई दे रहा है जिस तरीके से. दिस टीएस इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी. सो ये जाइलम में एक टीएस ऑफ लीफ लिया हुआ है. दिस इज द मिड रिब ऑफ दैट लीफ, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस. There is mesophyll cells are present. Mesophyll cells are of two types: palisade mesophyll cells and spongy mesophyll cells. Palisade are column-like spongy cells. They have spongy air cavities known as substomatal cavities. तो इस तरीके से एक लीफ का आपको टीएस दिया हुआ है. तो वाटर किस तरीके से किधर जाता है, तो स्टोमेटा आपको कल स्ट्रक्चर देखे थे हमने. स्टोमेटा से वाटर बाहर जाएगा तो यहाँ क्या होगा, कैविटी के अंदर, इन दिस कैविटी वाटर विल बी डेफिशिएंट, पानी कम हो जाएगा. पहले तो एयर में जाएगा पानी, तो एयर सूखी हुई रहेंगी, हवा में ह्यूमिडिटी कम रहेंगी. एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, ड्यू टू लेस ह्यूमिडिटी वाटर विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन. तो आउटर सरफेस पे का पानी इवेपोरेट हो जाएगा. तो आउटर सरफेस के सेल्स दे विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एडजेसेंट सेल्स, दे विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम देयर एडजेसेंट. तो इस तरीके से ये सेल्स, यहाँ से पानी बाहर जाने के बाद यहाँ के सेल्स का पानी इधर आ जाएगा. These spongy cells, from water from spongy mesophyll will come into substomatal cavity. They will absorb water from the adjacent cells. From adjacent cells, इस तरीके से पैसेज सेल से होते हुए सिम्प्लास्टिक मेथड से पानी यहाँ पर आता रहेगा. And again water will be lost here, water will be lost here, and ultimately it is lost into air. तो इस तरीके से पानी देखो बाहर की तरफ खींचा जा रहा है into air. कैसे एयर में पानी निकल रहा है. So now this water is coming here and जाइलम से अल्टीमेटली पानी पेरिसाइकल से पैसेज सेल से सबस्टोमेटल कैविटी से स्टोमेटा से होते हुए बाहर. सो द वाटर मूवमेंट इज थ्रू लीफ इज दस फ्रॉम जाइलम टू मेसोफिल सेल्स टू इंटरसेल्युलर स्पेसेस एंड देन टू कैविटी एंड देन टू स्टोमेटा एंड अप टू एयर. सो दैट वे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इज रिटन देयर. अब इस तरीके से क्या होगा, जाइलम से पानी बाहर जा रहा है. तो इमेजिन दिस इज अ प्लांट, यहाँ पे एक लीफ है, तो ये लीफ से पानी बाहर जा रहा है. तो यहाँ के जो जाइलम वेसल्स है उनमें का पानी कम हो, तो ये जाइलम क्या करेगा, इसके पिछले जाइलम वेसल से पानी खींचेगा. ओके, एंड दिस जाइलम विल पुल वाटर फ्रॉम नेक्स्ट जाइलम, दिस जाइलम विल पुल वाटर फ्रॉम नेक्स्ट and like this up to root. The all xylem vessels will pull water from their neighborhood xylem elements, and thus a pool will be created. Since there is maintenance of a continuous column due to cohesion, adhesion and surface tension, so the water column will be continuous up to the root leaf surface, and hence a pool is created.
98 to 99% water is lost. Remember, 98 to 99% water is lost in the form of evaporation, transpiration. Only less than 1% water is available for leaf for photosynthesis and other plant growth. So you can be asked how much water is available for photosynthesis. So less than 1%. This line is given in NCERT. Just near that transpiration bit, the heading transpiration where it is given. So there you can see cohesion, surface tension, transpiration pool theory, and in that passage there is given that less than 1% water is available for photosynthesis and plant growth, and remaining 98 to 99% water is lost in the form of transpiration. अब यहाँ पर इतना नुकसान हो रहा है, पानी लॉस हो जा रहा है और इस तरीके से पानी को खींचा जा रहा है, तो इसके कहीं ना कहीं कुछ फायदे और कुछ नुकसान है. पहला नुकसान तो यही है, सिंस देयर इज ओनली 1% वाटर दैट कैन बी यूज्ड एंड रिमेनिंग 99% इज गेटिंग लॉस्ट, मींस दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली harmful process because water is being lost in the form of water vapors. So ये नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए फिर एक साइंटिस्ट ने इसे कहा था, या दिस इज अ हार्मफुल प्रोसेस. Okay, this is an evil process, but this process has some benefits, and due to that benefits this process has some importance also. Finally, एक बार समराइज कर रहा हूँ ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी क्या होती है फिर. सो दस वी आर क्रिएटिंग वाटर ग्रेडियंट. यहाँ पर वाटर कम है और यहाँ पर वाटर ज्यादा है, सो वाटर विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ इटसेल्फ instead high water potential to low water potential, and thus water will be lost through stomata. So what is the statement of this theory? At last, the loss of water from stomata that produces a water gradient between atmospheric air and the substomatal cavities of leaf spaces as well as intercellular spaces. So this creates a pool, and that pool is responsible for pulling water from lower xylem elements up to upper xylem elements. Okay, so this pool theory has most important role in transport of water. Root pressure theory cannot do so at this much level. Measurements have shown that this pool can be so high, this pulling force can be so high that it can create a pool. It can transport water by pulling water up to about 130 meters. Up to about 130 meters. For example, longest trees in world, xylem, your gymnosperms, they are longest trees. तो उनमें ये पानी ऊपर तक पहुंचने के लिए जो कोई भी phenomenon है, that is transpiration. So this is most important phenomenon that is responsible for transport of water. What are the advantages and disadvantages of transpiration and versus photosynthesis? Let us see that. How transpiration is harmful? We have seen that it loses water. About 99% water is lost in the form of water vapors, and only 1%, less than 1%, is available for photosynthesis and plant growth. So therefore, it is harmful one. So it was termed as an evil. It was termed as an evil. So it is an evil process. Another disadvantage of transpiration is that it is energy consuming. It requires resources. पूरे सारे plant के पूरे parts involved होते हैं इसमें. So therefore it is energy consuming, plus resources are wasted here. Third, some plants like xerophytes, they need to prevent their transpiration because due to transpiratory loss that plant may dry up and they may die. So that plants, they have to produce some specific structures like thick cuticle covering, sunken stomata, that adaptations of xerophytes. So that is also energy consuming one. They have to produce that structures. तो इस तरीके से ये transpiration की वजह से उनको thick cuticle बनाना पड़ता है. And fourth disadvantage is that the transpiratory loss may lead to wilting of plant. Wilting मतलब उसे झुक जाता है plant, पहले सूख कर झुक जाता है, फिर dry होके वो टूट जाता है वो जो कोई भी part है. So that wilting, it may be temporary wilting or it may be permanent wilting. So permanent wilting may lead to death of plant body. So these are the four major disadvantages of transpiration. Very less water can be used for photosynthesis. Maximum water is lost in the form of water vapors. Second, energy consuming and resource utilizing process. Third is it has to form, the plants has to form some special structures as in case of xerophytes to prevent transpiration. And fourth one is it may lead to wilting, and wilting may lead to death.
and the transpiration is an evil process, नुकसान है उससे, बट स्टिल प्लांट्स कैरी दैट प्रोसेस। वो करते क्यों है फिर ट्रांसपिरेशन? कहीं ना कहीं उसका कुछ फायदा होगा, इतना नुकसान होने के बावजूद कुछ फायदा ज्यादा होगा, तभी तो प्लांट्स उसे आज भी लेकर चल रहे हैं। सो यस, देयर इज मच more beneficial process, it is much more beneficial because beside these losses it helps in forming various mechanisms. That first mechanism is transpiration creates a pool for absorption and transport of water. पानी को कैसे ले जाना है अभी हमने देखा, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाने के लिए जो पुल लगता है, दैट पुल इज क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सेकेंडली, इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होगा? जब वाटर पहुंचता रहेगा, तो वाटर पहुंचने के लिए लीव्स तक आना जरूरी है, तो उसके लिए ट्रांसपिरेशन होना भी जरूरी है। मतलब जब ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी रुक जाएगा और फिर लीव्स तक पानी नहीं आएगा, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, फोटोसिंथेसिस रुक सकता है। Then it also helps in transport of minerals. It cools the leaves. लीफ का टेम्परेचर कम रहता है, 10 to 15 डिग्रीज टेम्परेचर कम हो जाता है ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। एंड देन इट मेंटेन्स शेप साइज ऑफ दैट प्लांट सेल बाय मेंटेनिंग इट्स टर्जिडिटी। अगर सेल में पानी ज्यादा हो गया तो उसका पानी निकाल के बाजू वाली सेल को दे दिया जाता है और फिर ट्रांसपायर होकर वो लॉस हो जाता है, एंड दस द सेल विल कम टू नॉर्मल साइज। अगर वो सेल श्रिंक हो रही है, फ्लेश बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो गई है, तो उसमें वाटर ऐड किया जाता है बाजू वाली सेल से लेकर, एंड इट विल मेंटेन द प्रॉपर शेप ऑफ सेल। सेल्स का शेप मेंटेन रहेगा तो प्लांट बॉडी का शेप भी मेंटेन रहेगा। Thus, it maintains shape by maintaining turgidity of plant cells. So these are the advantages of transpiration. Hence, this process is carried out by plants, even if it is harmful. But the advantages are more. Therefore, plants carry out this process continuously. इस तरीके से इसे दो नाम दिए थे दो साइंटिस्ट ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, कर्टिस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी इविल, की होना चाहिए, ऐसा इविल है, क्या कर सकते, करना ही पड़ेगा। और दूसरा बंदा था स्टीवर्ट, ही कॉल्ड इट एज अनअवॉइडेबल इविल, कि इसे अवॉइड भी नहीं कर सकते, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, कि पानी ऊपर तक लाना है, फोटोसिंथेसिस भी करना है, शेप भी मेंटेन रखना है, ये सब काम भी करने, तो इविल है लेकिन काम का है, नेसेसरी है, ऐसा बोलने वाले कर्टिस थे। एंड इविल है बट अनअवॉइडेबल है, इट वाज टर्म्ड बाय स्टीवर्ट। Now let's see how minerals are transported, and first of all how minerals are absorbed and how minerals are transported. How minerals are absorbed by plant roots and root hairs. So let's see that point here. You know that soil is the reservoir of minerals and minerals are absorbed by roots. It is the primary function of roots. So root hairs, they are in contact with the soil and soil is containing that minerals. But the two things are there. First, that the minerals are charged, their ions are charged, they have positive or negative charges, so they are highly active. Second point, the mineral concentration in soil is very low as compared to plant body. मतलब हमें क्या करना है, चार्ज्ड पार्टिकल्स को, आयंस को सॉइल से उठाकर प्लांट में लेना है, प्लस सॉइल में उस मिनरल का कंसंट्रेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू प्लांट बॉडी, मींस लो कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में हमें उसे एब्जॉर्ब करना है। तो इस तरीके का जब एब्जॉर्प्शन होता है, व्हेन देयर इज मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, that is from low concentration of mineral to high concentration, so that will require energy. It is an uphill process and that will use ATP. It is called active absorption. So some minerals are absorbed actively, the minerals which are very least in soil, so they are absorbed actively. Some minerals are more in soil as compared to plant body, so therefore they are absorbed from high concentration to low concentration. That is, they will not need energy and therefore they will directly move downhill along the concentration gradient without using ATP. It is passively absorbed. That is absorption passive. Means all minerals are not absorbed passively. Some minerals are absorbed actively and some minerals are absorbed passively. Active absorption will need energy and special proteins. Passive absorption will also need proteins but not energy. Okay, so these are the two modes by which minerals are absorbed. Active absorption की वजह से एक चीज और हो जाएगी, वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है इन रूट्स, so it will also change. So active and therefore water will move by osmosis. So actively absorbed minerals are added to the water present in xylem and therefore water potential of that
water in xylem will change and hence water will move by osmosis. These lines are given in NCERT. The three most important lines are given here. First one, how active absorption is done. Why active absorption is done? We have seen that minerals are they are charged and they are present in low concentration, hence they should be absorbed in by active absorption. Second, special proteins are required for active process, active absorption, and they pump that minerals from soil to the cytoplasm. Third, there are some transport proteins. They are most important here. They are present on endodermal cells, and that transport proteins of endodermal cells, they are the main checkpoints, they are the main control points that adjust the quantity and types of minerals solutes that are coming into xylem. तो आपका एमसीक्यू यही बन सकता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, डैश ऑफ डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, or the transport proteins of dash dash are responsible for checking or adjusting the mineral quantity and types of minerals. So these transport proteins that are located on endodermis, याद करो एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप वाला, वहां के जो पैसेज सेल्स है उनमें से जब मिनरल्स अंदर आते हैं, सो मिनरल्स की मूवमेंट अफेक्ट होंगी, कौन से मिनरल्स अंदर आने चाहिए कौन से नहीं आने चाहिए, दिस इज कंट्रोल्ड, दिस इज चेक्ड बाय दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एंडोडर्मल सेल्स. Plus, these endodermal cells are suberized. They are covered by Casparian strips tangentially as well as radially. So, therefore, this suberized layer of endodermis also ensure that there is unidirectional flow of minerals. How? आपको पता होगा, passage cells are the cells where suberin is absent. So, therefore, from that cell only the mineral can enter. Otherwise, बाकी के endodermal cells से मिनरल्स अंदर नहीं आ पाएंगे. तो एक बार अंदर आ गए तो फिर यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज अगेन सुबेरिन इज प्रेजेंट हियर. सो देयरफॉर देयर विल बी अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो अप टू xylem. एपिडर्मिस से होके आएंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से होते हुए मिनरल्स आएंगे वाटर में डिसॉल्व होकर अप टू पैसेज सेल्स, पैसेज सेल्स से xylem तक पहुंच जाएंगे. एंड thus the movement of minerals is also only in one direction, due to which part? Due to suberized layers of endodermis. So thus minerals are absorbed. Ultimately they are mixed into xylem, and xylem में water में मिल जाने के बाद में they are simply translocated along with the sap, that will make a sap, and ascent of sap, again ascent of sap will be due to transpiration. तो इस तरीके से minerals up to the leaves, up to the growing parts, they are transported along with water and xylem. These minerals are then translocated to various parts of plant body wherever they are required. For example, growing parts such as apical meristem, young leaves, young fruits. So that parts are new branches where they are arising. So at that part, these minerals are required in abundant quantity. So in minerals को हमें वहाँ तक ले जाना है. तो first of all, the only mean is there. It is through transpirational stream, the ascent of sap. सैप में मिल जाएंगे मिनरल्स, एब्जॉर्ब होने वाले मिनरल्स पानी में मिल जाएंगे, xylem में जाएंगे, और ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम जो तैयार हो रही है लीव्स तक की, उसके थ्रू होते हुए लीफ के वेन्स तक, जो कोई भी वेन्स के एंडिंग्स है, xylem एंडिंग्स, वेसल्स के एंडिंग्स, वहां तक ये मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे. तो इस तरीके से रूट्स यहाँ पर सोर्स बन जाएंगे मिनरल्स के, क्योंकि वहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में, और जो ग्रोइंग पार्ट्स है दे विल बिकम सिंक. सोर्स to sink. Source is the area where there is high concentration of minerals, and sink where there is requirement, there is need of minerals. So the mineral translocated from source to sink, and the chief sink are growing parts like meristems, young meristems, and other growing parts, young parts like leaves, young leaves and fruits. तो ये मिनरल्स यहाँ से यहाँ लेकर जाए. प्लस कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो ओल्ड पार्ट्स में से निकालकर हम पानी में मिलाते हैं, xylem में मिलाते हैं. जैसे कि कोई लीफ है, उसकी एज हो गई है, इट इज अबाउट टू से फॉल ऑफ, सेनेसेंस में जाने वाला है, वो पहले येलो हो जाएगा, येलोइंग होके बाद में वो ड्राई होकर टूटकर गिर जाएगा. सो इस लीफ में से भी कुछ मिनरल्स हम पहले निकाल लेंगे. दैट मिनरल्स आर टेकन फर्स्ट ऑफ ऑल. सम मिनरल्स दैट कैन बी रेडिली मोबिलाइज्ड, दे कैन बी रिमूव्ड इजीली, दे आर NPKs. Remember, which are readily mobilizable elements, NPKs, nitrogen, phosphorus, potassium and sulfur. These are readily mobilized. Whereas immobile elements, it will include calcium. So calcium will be immobile, so it cannot be easily moved, because calcium is present between the cells in middle lamella in the form of calcium pectate.
तो वो कैल्शियम आसानी से निकाल नहीं सकते, तो कैल्शियम वही रहेगा, इट कैन नॉट बी मोबिलाइज्ड. अदर एलिमेंट्स NPKs कैन बी मोबिलाइज्ड, दे आर टेकन फ्रॉम दैट ओल्ड पार्ट्स ऑफ लीफ and then it is mixed in the form of organic matter, organic compounds के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. फॉस्फोरस, नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होंगे, either in amino acids, either in the form of other organic compounds, and then they are mixed in xylem. Some amount of minerals are also mixed in phloem. तो जाइलम और फ्लोएम दोनों में से थोड़े थोड़े मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे. ऐसा मत समझो कि जाइलम से ही सारे मिनरल्स जाएंगे. Small quantity of minerals is also transported through phloem. Transported mainly through xylem, it is correct, but small quantity is also transported through phloem. तो ये एक important point है. And these minerals and then transported, they are carried from source to sink. They will reach the vein endings, and from vein endings में फिर जाकर क्या होगा, वेन एंडिंग्स में उनका हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और एडजेसेंट सेल्स में लो कॉन्सेंट्रेशन. सो सिंपली मिनरल विल डिफ्यूज फ्रॉम, दे आर ड्रॉप्ड आउट बाय डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस सेल विल टेक अप इट एक्टिवली. वो उसको तुरंत एनर्जी लगाकर उठा लेगी, क्योंकि उसे नुकसान में जाने नहीं देना है, इजीली उसे अपटेक कर लेना है. सो देखो क्या लाइन लिखी हुई है, एलिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड अप टू वेन एंडिंग्स and they are dropped into adjacent cells by diffusion, and that cells will take up the minerals by active transport. They will absorb them by active absorption. Thus minerals from root and other parts, old parts, are translocated to growing parts. So this is about mineral translocation. We will see about phloem translocation, that is mass flow hypothesis, in our next lecture.